Namaskar, good evening. You're watching Nation Wants to Know and I'm Swati Joshi. As India witnesses shocking scenes of violence and deadly attacks in West Bengal in the name of protests against the Waqf Amendment Act, today Prime Minister Narendra Modi launched a no-holds-barred attack against the anti-Waqf law lobby. He targeted Rahul-led Congress, alleging that the Grand Old Party put up a facade of caring for the minorities while only working to please the Muslim fundamentalists, accusing it of spreading vote bank virus, saying that the appeasement harmed Muslims too. इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। Well, the opposition has meanwhile dug in its heels on the Waqf Act, countering the Prime Minister's charges as misinformation. Congress-led INDI alleged that BJP was undermining the constitutional rights of minorities and once again reiterated that the states with opposition government will not be implementing the law. बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद से इस मुल्क में मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। आपके आने के बाद एक भी ऐसा काम नहीं किया गया कि आप मुसलमानों की हमदर्दी करें। अगर आपको हमदर्दी होती मुसलमानों से तो आप कुछ टिकट देते मुसलमानों को, कुछ एमपी बनाते, मिनिस्टर बनाते। You know, he is basically misguiding this nation. What is the benefit of Congress party? The entire Muslim community, 99.9% Muslims, they are opposing this act, and not only Congress party, all opposition parties have been opposing this act. Why is attacking on Congress only? Well, the defiance is very much visible in West Bengal. Now, BJP's Amit Malviya has leveled serious allegations against West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, claiming that the recent communal violence in the state was both premeditated and state-sponsored, a sentiment that seems to be resonating on ground. Residents of Murshidabad made serious allegations as they fled their homes in fear. They claimed that they received rape threats, their children were targeted, and even their water tanks were poisoned. আমাদেরকে বিষ দিয়েছে, জোরমস্তি গায়ে পেট্রোল ঢালছে, জোরমস্তি গায়ে পেট্রোল ঢালছে, দিয়ে বলছে কি তোমরাকে মানে নামও নিশান মিটিয়ে দেব, হিন্দুর নামও নিশান মিটিয়ে দেব। Now there is no state machinery is working here. This government used to say खेला होवे. That day actually parade has been done. कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी। ট্যাঙ্কির জলে বিষ টেনে লিয়ে গেল, দেও তো কোপাইলে দুই বাপ বেটাকে। পুরো ফাঁকা, এখন কি করবে? জানের ভয় সবারই আছে, জান তো বাঁচাতে হবে, প্রাণের ভয় তো সব পালিয়ে চলে গেছে। But despite the clear fallout of provocative statements, the opposition doesn't seem ready to back down. Congress and its allies today were once again seen fear-mongering and provoking people against the Waqf reform. Former Davangere municipal corporator from the Samvidhan Rakshak party was seen blatantly calling for vandalism and violence during protests, while Jharkhand Mantri Hafizul Ansari said that for them it was Shariat first
and then the Constitution. रास्ते पर उतरना जरूरी है। जो भी करना चाहते हैं तुम्हें, चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। हर गांव से 8-10 आदमी मरना, कैसा होना 150, वो हुआ तो सिर फुट के कामा करना, बसा जलाना, ट्रेना जलाना। राज्य सरकार हम लोग डिसीजन लेंगे कि उस कानून को हम लागू करेंगे कि या नहीं करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में देगा। देखिए अभी 3 तलाक भी है, लेकिन क्या मुसलमान माना 3 तलाक में चल रहा है क्या? तब अपना शरीयत है, अपना शरीयत के हिसाब से चल रहा है। दोनों ले हम लोग सीने में कुरान और हाथ में संविधान लेके चलते। So the massive blame game continues. The opposition says that the BJP is trying to muzzle the voice of the minorities through the Waqf law. BJP hits back saying that this is nothing but fear-mongering. The question that we are asking is Congress's vote bank virus hurting Muslims? You can cast your vote at Times Now on X. You can register your say. Tell us what you think about the issue, and we'll reveal the results right after the debate. So let's open up the debate. Let's go across to our guests. We're joined by Tom Vadakkar, BJP national spokesperson. We have Dr. Shalini Ali, national convener, Muslim Rashtriya Manch, and also the author of Waqf Amendment Bill 2024, Respect for Islam and Gift for Muslims. We have Khaliqur Rahman of the Congress joining us on the broadcast as well. Sabir Ali, political analyst, and Kapish Srivastav of the Samajwadi Party. Let me first come to you, Khaliqur Rahman. Will you accept the challenge then? The Prime Minister says that the Congress Party for so long has been fooling the Muslim community, using them as a vote bank, which in fact has harmed them instead of benefiting. Why don't you instead give 50% tickets to them, have more representation? Perhaps that will help the community better. In fact, it is the other way around. It is the Honorable Prime Minister and the BJP party who is misguiding not only the Muslims, but the entire nation. And Prime Minister and the BJP, I believe, has got no right to talk about the Muslims because, you know, when Prime Minister says that the Congress should give tickets to the Muslim, I want to ask the Prime Minister, how many Muslims are there in the parliament which are being represented by the BJP party, and how many are there in the state assemblies in the country? Because we have more than 6,000 MLAs. Out of 6,000 MLAs, how many tickets the BJP has given to the Muslims? And the Prime Minister, in fact, is the Prime Minister for the entire nation. He is not the Prime Minister only for the... When did they say that they work for a particular religion or want vote bank of a particular religion? The slogan that they've given is of Sabka Saath and Sabka Vikas. And in fact, isn't that what the Congress party accuses them of, working against the community? Today, you want to ask the BJP why they're not giving tickets to Muslims? Yeah, no. That, see, why we are asking the BJP is because the BJP, the Prime Minister is alleging the Congress party and asking this thing. I want to ask the Prime Minister, from when all of a sudden the Prime Minister and the BJP party has, you know, woken up for the welfare of the Muslims in the country. And as one of the you know, I think it was from the JMM party who very rightly said the triple talaq bill was passed. But is it being, followed or practiced by the Muslims here? No, because the BJP always tries to create a narrative which in fact you're not answering. No, you're not answering the question. The question is, since when did, one second, since you spoke about welfare, my question is, how many welfare schemes have been launched only for the Hindus or the Jains or the Christians or the Sikhs and not for Muslims? No, I'm not saying that any welfare scheme which is launched will be launched only for the Muslim. On what basis are you alleging that they don't work for the welfare of the Muslims? But I want to ask, what is the union budget for the minorities? This is hardly 3,500 crores, or maybe 3,600 or 700. But I mean, is that sufficient for the Muslims, for the development and welfare of the Muslims? But when it comes to the other welfare schemes, there is a clear discrimination which is being done with the Muslims. I will pose that question to Tom Vadakkar. I will ask that question to Tom Vadakkar. But will you accept the challenge? Will you accept the Prime Minister's challenge, since you talk about the minority
vote bank and how they've been neglected by the BJP and the BJP has not done enough for them. Will you accept the challenge of 50% ticket distribution to Muslims? We never talk about the minority development, or we talk about the inclusive development. But you were just saying that the budget for minorities is not what it should be. That is when the Prime Minister is raking up that subject, when you are raking up that subject. And in Karnataka, your ministers, in Karnataka it has been done, hasn't it? Even before the budget was brought in, your minister said that it should be double. Jitni abadi utna hak. Definitely, why not? Yes. That's See, what now you are changing your goalposts. First, you said we never speak about all this and inclusivity, and on the issue of Karnataka, you're saying yes. They are marginalized. Okay, Tom Vadakkan, what has your government really done about the minorities, and why don't you give 50% tickets to people from the Muslim community? See, we have never claimed that we are a minority party. We are an all-India party. We give tickets on winnability. There are people who have been receiving tickets, who have become ministers, and that has been a fact of life. Now, as to the question here, when they talk about Karnataka, it's okay in Karnataka for them. But when it comes to Delhi, I really wish they read the Sachar Committee report. The Congress party must first delve into the Sachar Committee report to understand the situation of the backwards in the Muslim community. We are only supporting those who are on the bottom of the ladder, who have suffered. What was the objective of the Waqf Board? The objective of the Waqf Board was to establish schools, colleges, hospitals. Nothing of that happened. What happened, Swati, is that they started leasing land to political leaders. Okay. I'm not naming them. If you take names of even the topmost leader in the Congress party, how much of property? I mean, Waqf Board has been taking poor people's land. Yes. And the Congress leaders have been taking land from the Waqf Board. Okay. So you can understand. So you're saying the amendment was done to benefit self and people, not from the Muslim community. I want to bring in Sabir Ali. Sabir Ali, एक आरोप ये भी है कि वक्फ के नाम पर इतनी गलत जानकारी ऑपोजिशन ने फैला दी है, इतना लोगों को डरा दिया है कि आज हालत देखिए पश्चिम बंगाल में ये प्रदर्शन वक्फ कानून के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ, ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि वहां पर जिस तरह से हिंसा हुई, हिंदुओं को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। देखिए, दावे तो बहुत सारे किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि मुसलमानों के बारे में सोच रहा है, इससे बड़ा मजाक वाली बात क्या है? जिस पार्टी के तहत हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज्यादा चोट खा रहा है, आए दिन मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही है, घरों को तोड़ी जा रही है, मस्जिदों को तोड़ी जा रही है, मदरसों को तोड़ी जा रही है। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? अगर रास्ते में दुकान में फल भी बिक रहा है तो उसे भी नेम प्लेट लगाने के लिए नेम प्लेट लगा के बेचो, और हिंदू समाज से कहा जा रहा है कि सर मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? मुसलमानों एक का संपत्ति का लेके सोच रहा है। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? ये लोग जो कैमरे पर कह रहे हैं, ये लोग जो कैमरे पर कह रहे हैं कि बाप बेटे को मार दिया, और कोई कह रहा है पानी में जहर मिला दिया, और कोई कह रहा है कि रेप थ्रेट है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि लोग अपना घर छोड़ छोड़ के चले गए क्योंकि घर में आग लगा दी, ये कौन लोग हैं सर? देखिए, बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कई दिनों से चल रहा था। हाँ। मैं डायरेक्ट आपको बता, ओके, आई थिंक दैट्स शुभेंदु अधिकारी। बैड ऑडियो लाइन। साबिर अली जी, आपकी आवाज जो है ना रुक रुक करके आ रही है, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है। I want to bring in Dr. Shalini Ali. I want to bring in Dr. Shalini Ali. Dr. Shalini Ali, I don't know if you heard Sabir Ali, but Sabir Ali says that under the Modi regime, the situation of the Muslims have only worsened. That is what is happening. They've been pushed to the margins. I beg to differ completely, because there are 2-3 points which I've been hearing the other panelists, and I want to put that on record. Mr. Modi has been the Prime Minister for this country, and we've all seen that he is a very person who goes by the rules, he goes by the book, and he doesn't want any kind of intolerance amongst any of the communities. Now, when it comes to triple talaq, I beg to differ over there also. The cases of triple talaq have decreased to a large status, to a large extent, and today we have Mahila Thanas also in the police stations. It's about the women going and fighting for their rights, which they have been doing. Number 2, when Narendra Modi ji says
and says it on a public platform and asks Congress to make a Muslim as their party leader, I agree with him as much as I can, because it's not the question of BJP not having Muslim leaders in their party or having MPs from the Muslim background. It's about what kind of Muslim leaders do you want in this country. Do you want leaders from the Congress, Samajwadi Party and from Asauddin Owaisi's party who have grabbed lands of Waqf and they are all leading lavish lifestyles, whereas the Waqf is meant for the poor, it's meant for orphanages, it's meant for medical facilities, it's meant for upliftment of the poor in the Muslim society. Okay. Now when you come to Bengal, Bengal has become a state of one rule, where you have the ministers from the TMC going on stage and saying that no, we are not going to accept the Waqf board, the new amendment, and we are going to create havoc. So when the ministers from the ruling party are speaking in large numbers itself, what do you expect? How can you blame Narendra Modi or BJP for the violence that is taking place there? Okay, How can you if you can respond to that? जब ruling party के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी खुलेआम कह रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी पर कैसे आरोप लगा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने का? पश्चिम बंगाल की सरकार पर इसकी जिम्मेदारी आती है। आप नफरत ही पैदा कर रहे हैं ना, आप तो नफरत पैदा कपिल श्रीवास्तव, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सर? कपिल जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जी 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 जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आप इस चीज को देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जब अकलियत के लोगों के बारे में और उनके कल्याणकारी भावना के साथ कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन उनके पूरे कर्म को अगर देख लीजिए तो हास्यास्पद लगता है। क्या आज भी मैडम जकारिया का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा है? और क्या कोई गोधरा के दंगे और किल्लों से तुलना कोई नहीं जानता? और आप वक्फ बिल के मदद से ही मुस्लिम लेडीज को और मुस्लिम पाकमानदार्स को और ओबीसी को ही आप अपलिफ्टमेंट करेंगे। आपके पास और कोई चारा नहीं है। उनके लिए अलग स्कीम चलाने के लिए सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कोई दूसरी नीतियां नहीं है। और आप आखिर जो है किस तरीके से इस बात को आप कहते हैं कि आप मुस्लिमों के बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं। आप तो अपनी पार्टी में एक विधायक भी नहीं रखे हुए, एक सांसद नहीं रखे। तो आप इस बात को सोचिए, न राज्यसभा में न सांसद का ना टिकट देते हैं। क्या इनको 20 करोड़ की 25 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा मुस्लिम नहीं मिलता है? हमारी बहन कोई देती है जो उंगली खड़ा की हुई है। ये कितना अच्छा बोल रहे हैं। वही सवाल वो कांग्रेस से और बाकी के लोगों से पूछ रहे हैं जो चिंता जता रहे हैं इस बात को लेकर कि मुसलमानों को साइडलाइन किया गया, इग्नोर किया गया, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं आप एक काम कीजिए, आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, किसी मुस्लिम व्यक्ति को, किसी मुस्लिम पॉलिटिशियन को आप अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दीजिए। आप क्यों नहीं बनाते हैं? ये सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे। कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस में भी बनेगा, हमारे यहाँ भी बन जाएगा। कोई कब बनेगा सर? सवाल तो यही है ना, इतने सालों तक उस वोट बैंक पे राजनीति होती रही। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। 30% से ज्यादा हमारे यहाँ विधायक जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। हमने मंत्री बनाया, डिप्टी मुख्यमंत्री का पूरा पावर आजम साहब को दिया। आज भी आप देख लीजिए, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे हमारे सांसद संसद में हो, अच्छी तरीके से हमने अपने बहन और भाई सब पहुंचाए इस्लाम के। पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया, लेकिन पार्टी का प्रेसिडेंट परिवार से ही। डॉक्टर शालिनी अली, कपिल श्रीवास्तव सिंह, वी आर वॉकिंग द टॉक। वी ऑलरेडी हैव गिवन रिप्रेजेंटेशन। कपिल श्रीवास्तव who belongs to the Samajwadi Party saying हमने तो मौका दिया। Azam Khan, he has spoken. See, he has spoken about Azam Khan. Let me give it to you on record that in 2022, the Shia Waqf Board had to ask for property from Azam Khan to be returned to the Shia Waqf Board. He's talking about a leader from his party. That's why I did not want to name anyone's name. You ask me about Samajwadi Party, you ask me about Congress, you ask me about Asauddin Owaisi, you ask me about all other parties. I can give it to you with detailing how much Waqf land they have taken. And today, if Narendra Modi or BJP is talking about the amendment, what are the amendments? He is asking for transparency. He is asking for audits. He is asking for the legitimate heirs to get their share, and then
Waqf Aulad is given. He's asking for, what else is he asking for? He's only asking for the Muttawalis to give 5% of their earnings to the Waqf board. What is wrong in it? Okay, what's wrong in it, Khaliqur Rahman? Air and speak about a leader of your party who Okay, Khaliqur Rahman. Who has taken Only transparency and accountability. Khaliqur Rahman. Yes, in fact, it is with the basic intent of the government and the work by user that, in fact, gives the government the blanket powers to seize and take away the properties from the work board and declare them as the government properties, and the rights of the land survey commissioner of the work boards, that in fact has been given to the district collector. And who is the district collector? District collector is the representative of the government. Who would you think would the district collector favor? And another thing I just want to ask, Okay, but the BJP has been in power Yes, for the last 11 years. now there are several petitions. There are several petitions in the Supreme Court where all of this will be brought up, where of course people will present their arguments. I'm talking about what's happening on ground. Why is there violence happening in the name of Waqf protest? Did you hear what Kabir Khan said? Sacrifice करो, जाके बस में आग लगाओ, जाके ट्रेन में आग लगाओ, 2-4 लोगों का सर फोड़ दो. I condemn that. And everyone has to condemn such But kind where of is that coming statements, from? actually. It has reached a point where people's houses are being burned, they are being forced to flee. Sabir Ali, is that acceptable? It is very unfortunate. Is that acceptable, Sabir Ali? कोई भी भड़काऊ भाषण अगर देता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसको हम लोग कंडेम करते हैं. कंडेम करने से सर अगर बात बनती, कंडेम करने से अगर बात बनती तो क्या था? साबिर अली देखिए क्या हो रहा है सड़क पर. वक्फ पर एक स्टेटमेंट कोई देता है, प्रोटेस्ट होता है और इस कदर प्रोटेस्ट होता है कि वो वायलेंट हो जाता है. आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पुलिस ने वहां पर अपना काम ठीक से नहीं किया. बीजेपी इज ऑल्सो अलेजिंग दैट. हम लोग हमेशा से कहे हैं कि जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग उनके साथ है. किसी भी तरीके का वायलेंस या भड़काऊ भाषण हमारा जिस तरीके का चल रहा है उसका हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करते हैं. और जो घटना यहाँ भी घटा है, जो मामला हुआ है उसका भी हम लोग कंडेम करते हैं. लेकिन अभी मामला बिल्कुल हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में है और चारों तरफ जो है जो गर्म हुआ था उसको ठंडा कर दिया. Tom Vadakar, situation is under control. We are condemning it. That's what the opposition is saying, that we do not endorse such violence. Quick rebuttal. स्वाति, पीने के पानी में पॉइजन अगर डाला जाए और लोगों को अपना घर छोड़कर भागना जाए, आपने कंडेम किया, बहुत अच्छी बात है. आप तो पीकर देखिए वो पानी, आपके नलों में अगर पॉइजन डाला जाता है क्या हालात है. और ये कौन कर रहा है? ये वो पॉलिटिकल लीडर्स करा रहे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड से जमीन ग्रैब किया है. ये वेस्टेड इंटरेस्ट खेल रहा है. ये इकोनॉमिक इशू है, ये रिलीजियस इशू नहीं है. जमीन वक्फ को दिया और वक्फ से इन्होंने उसको लीज पर लिया और आज वो वापस करने का नौबत आ गया है. तो इंडिया अलायंस सब हाथ मिलाकर अभी एसपी हो या हैदराबाद saying that they are pretending to support the community and pretending to act like they are working for their benefit, but they are ultimately harming the Muslim community. That's what you said. That's what the Prime Minister also said. Meanwhile, the opposition says this is nothing but gimmick on part of the government. The matter is now in the court and we'll fight this battle legally. Thank you very much, Dr. Ali and gentlemen, for joining us on the broadcast. Thank you for your time. It's now time also to reveal the results of the poll. This is the question we asked. Congress's vote bank virus hurting Muslims. 75.7% people say yes, it is hurting people of the Muslim community, while 24.3% people say no. With that, we are wrapping up this edition of Nation Wants to Know. There's a lot more lined up on the other side. Stay on with us.